Welcome to Sareen Banking Solution. If you are preparing for your bank promotion exam or JAIIB exam, you are at the right place now. In this today's session, we are driving a very important and high scoring topic, the latest amendment in the Income Tax Act 2025, especially those impacting the banking operations effective from April 2026. These amendments are highly relevant for your exams and your understanding. Moreover, it will be helpful for banking operation day-to-day activities. Let's start today's session. आज का पहला क्वेश्चन है, under section 194N, who is responsible for deducting TDS on cash withdrawal? और इसकी ऑप्शन है the account holder, income tax department, banks, cooperative banks and post office and SEBI. और इसका राइट आंसर है सी, बैंक, cooperative and bank post offices. Under section 194N, TDS deducted by the banks, maybe private bank, maybe cooperative banks or post offices, whenever making any cash payment to any person in excess of specified limit from their account. Next question. What is the TDS rate on the cash withdrawal exceeding rupees 1 crore in a financial year if the person has filed ITR for the last 3 consecutive years? और इसका ऑप्शन है 1%, 2%, 5%, 10%. और इसका राइट आंसर है 2%. TDS is deducted at the 2% on the cash withdrawal in excess of rupees 1 crore in a financial year, providing the person has filed ITR for the 3 last years. Next question. Mr. Raj has not filed ITR for the last 3 years. He withdrew cash rupees 60 lakh in cash from his saving account. What TDS will be deducted? और इसकी ऑप्शन है nil, as rupees 60 lakh is below rupees 1 crore. B, 2% on 40 lakh, amount above 20 lakh. 5% on 60 lakh. Last option, 2% on 60 lakh. और इसका राइट आंसर है 2% on 40 lakhs, amount above 20 lakh. If a person has not filed ITRs for cash withdrawal between 20 lakh and 1 crore, TDS is applicable at the rate of 2%. Since Mr. Raj withdraw rupees 60 lakh falls in this range, and 2% TDS applies on the amount exceeding 20 lakh, that is 40 lakh. Next question. In non-ITR filer withdraw rupees 1.5 crore in cash, what will TDS apply? और इसकी ऑप्शन है 2% on the entire amount, that is 1.5 crore, 2% on 80 lakh plus 5% on 50 lakh, 5% on 1.5 crore और no TDS. और इसका राइट आंसर है 2% on 80 lakh plus 5% on 50 lakh.
For non-ITR filers, TDS at the rate of 2% applies on cash withdrawal between 2 lakh to 1 crore, and TDS at the rate of 5% applies on the amount exceeding 1 crore. So 2% on 80%, that is, and 5% on 50 lakh above 1 crore. Next question. Mr. Sharma holds account in SBI, HDFC, and ICICI. He withdraws rupees 1 crore from each in cash. What is the total TDS liability under section 194N? और इसकी option है 2% on 2 crore, no TDS, as each bank's limit is 1 crore separately. 5% on 3 crore, 2% on 3 crore. और इसका right answer है no TDS, as each bank limit is 1 crore separately. हर बैंक ने अपने 1 करोड़ तक अगर कैश विड्रॉ करता है तो वो टीडीएस निकालेगा. अगर वो डिफरेंट बैंक से निकाल रहा है तो वो अलग अलग बैंक से अगर 1 करोड़ से ज्यादा निकालता है तो टीडीएस लगेगा, अदरवाइज इसको टीडीएस नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन 194N TDS is applicable to only residents individual, only companies, both resident and non-residents. लास्ट ऑप्शन ओनली HUF. और इसका राइट आंसर है बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. जो सेक्शन 19N है that will be applicable on both resident and non-residents. Next question. Which of the following is exempt from TDS under section 194N? और इसका ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी withdrawing rupees 2 crore, APMC registered traders making payment to farmer, a salaried individual withdrawing rupees 1.5 crore, a partnership firm withdrawing rupees 90 lakh without filing ITRs. और इसका right answer है APMC registered trading making companies payment to the farmers. Next question. TDS deduction under section 194N option cannot be claimed back. Next option is a final tax. Next, can be claimed as credit while filing ITRs. Last पे is refunded automatically. और इसका right answer है TDS deduction under section 194 can be claimed as a credit while filing ITRs. Next question. From financial year 2025-26, what is the TDS exemption threshold on FD, RD interest earned at a bank for the regular non-senior citizens? और इसके ऑप्शन है 10,000, rupees 40,000, 50,000, 1 lakh. और इसका राइट आंसर है rupees 50,000. जो इससे पहले 40,000 थी, इंटरेस्ट अगर आपका 40 बनता था तो वो आपको टीडीएस नहीं बैंक काटता था, लेकिन उसकी लिमिट बढ़ाकर अब 50 कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज रिवाइज्ड TDS exemption limit on FDR interest for the senior citizens aged 60 plus for financial year 2025-26? और इसके ऑप्शन है rupees 50,000, 75,000, 80,000 और rupees 1 lakh. और इसका राइट आंसर है rupees 1 lakh. तो प्रीवियस ईयर में 75,000 था, उसको इंक्रीज करके लिमिट नई एक्ट में 1 lakh कर दी गई है फॉर सीनियर सिटीजन्स. नेक्स्ट. मिसेज मीरा एज 65 earn
95,000 as FD interest from a bank in financial year 2025-26 will be detected. TDS will be detected. इसकी options हैं yes 10% on 95%, 95,000, yes 10% on 45,000 above 50 limit. C, no, since 95 is below rupees 1 lakh senior citizen threshold. Or D, yes 20% as PAN is not updated. और इसका राइट आंसर है सी कि नो, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज 95,000 is below than the rupees 1 lakh for senior citizen threshold. Next question. What is the rate of TDS deduction under section 194A on FDR interest when PAN is provided? इसके ऑप्शन है 5%, 10%, 15% or 20%. Right option 10%. Next, is TDS deducted on saving bank interest under section 194A? इसकी options है yes if interest exceeds rupees 10,000, yes if interest exceeds 50,000, no saving account interest exempted from TDS under section 194A. Last option yes always at 10%. और इसका राइट आंसर है सी नो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं काटा जाएगा एज सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टीडीएस अंडर सेक्शन 194A. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू अवॉइड टीडीएस डिडक्शन on FDR interest when the total income is below the taxable limit, which form should a person below 60 years submit to bank according to the new income tax rule 2025? और इसका ऑप्शंस है फॉर्म 16A, फॉर्म 15H, फॉर्म 15G और फॉर्म 121. और इसकी राइट आंसर है फॉर्म 121. इससे पहले ये 15H या 15G लिया जाता था. अब चाहे वो सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन है, दोनों के लिए उन दोनों फॉर्मों को मर्ज करके एक नया फॉर्म बनाया है 121. अब ये लिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द अदर केसेस नोट बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस अंडर सेक्शन 194A, what is the revised TDS threshold for the interest from financial year 2025-26? और इसकी ऑप्शन 5,000, 10,000, 40,000, 50,000. और इसका राइट आंसर है 10,000. नेक्स्ट. कैश डिपॉजिट in saving amount exceeding dash in a financial year are reported by the bank to the income tax department as specified financial transaction. और इसकी ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख. और इसका राइट आंसर है 10 लाख. अगर फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा अमाउंट इन कैश अकाउंट में जमा होता है तो उसकी जो रिपोर्टिंग है अंडर स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बैंक को इनकम टैक्स अथॉरिटी को करनी पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एसएफटी रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड फॉर द कैश डिपॉजिट इन ए करंट अकाउंट? इसके ऑप्शन 10 लाख, 25 लाख, 40 लाख और 50 लाख. और इसकी राइट आंसर है 50 लाख. जैसे सेविंग में 10,000 थी और करंट अकाउंट में
ये 50 लाख है। नेक्स्ट, Mr. Arun deposit 50 lakh in cash in his saving account, but cannot explain the source. What is the tax implication? और इसकी options है tax at slab rate, taxed at 30% flat, taxed at 60% plus 25% surcharge plus 4% cess under section 68. No tax if deposited in his own account. और इसकी right option है taxed at 60% plus 25% surcharge plus 4% cess under section 68. अगर कोई 10 लाख से ज्यादा अपने अकाउंट में कैश जमा करता है और उसका सोर्स वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो ही हैज टू मेक पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 269SS and 269T, cash loan or deposit in cash exceeding dash amount are prohibited. और इसके ऑप्शन है 10,000, 20,000, 50,000 और 1 lakh। और इसका राइट आंसर है 20,000। As per the section 269SS and 269T of the Income Tax Act, the assessee is not allowed to accept or repay loan exceeding 20,000 during a particular year. In the case of any violation, a penalty is levied under the section 271D and 271E, which is equivalent to the amount of the cash loan accepted or repaid. Next question. A person received rupees 3 lakh from a single customer in a single transaction. This is violates which section? इसके ऑप्शन है सेक्शन 194N, सेक्शन 169ST, सेक्शन 194A और सेक्शन 68। और इसकी राइट आंसर है सेक्शन 269ST। नेक्स्ट क्वेश्चन, income received in advance is treated as option income in profit and loss account, asset, credit liability और capital reserve। और इसकी राइट आंसर है करंट लाइबिलिटी। जो इनकम हमने रिसीव एडवांस में की है दैट विल बी द करंट लाइबिलिटी फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल अकाउंट? ऑप्शन कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और सेल्स अकाउंट। और इसकी राइट ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, द गोल्डन रूल फॉर द नॉमिनल अकाउंट income expenses is option debit what comes in, credit what goes out. Second option, debit the receiver, credit the giver. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Last option, debit all income and credit all expenses। और इसका राइट आंसर है debit all expenses and losses and credit all income or gain. Next question. The rule for the real account assets in double entry is debit the giver, credit the receiver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses, credit all incomes. Debit the receiver and credit the giver। और इसका राइट आंसर है debit what comes in, credit what goes out। Next question. If goods worth rupees 5,000 returned to a supplier, the journal entry is option debit purchases and credit supplier, debit supplier and credit purchase returns, debit sales, credit stock और debit cash and credit supply। और इसका राइट आंसर है debit supplier and credit
परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने जो परचेज की थी वो उसको वापस की है, इसलिए अपने अकाउंट में हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट देंगे और सप्लायर को डेबिट। साथियों, आज के कॉम्पिटिटिव बैंकिंग वातावरण में सफलता के लिए सही ज्ञान और उसका नियमित अभ्यास और विषयों की स्पष्ट समझ बहुत जरूरी है। इस प्रेजेंटेशन में शामिल प्रश्न बैंकिंग के महत्वपूर्ण विषयों के एवं लेटेस्ट परिवर्तन पर आधारित है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको मजबूत बनाने में मदद करेंगे। आशा है कि ये सत्र आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला, आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला तथा परीक्षा में आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने में सहायक होगा। अगर आपको ऐसे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियोस आपके पास तुरंत आ सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।